Hello people, for those of you who are new to my channel, this is Dev from The Wandering Soul, and for those of you who have already subscribed to my channel, welcome back. So today we are going to watch a video on a topic of health. This is something, health and fitness. This is something that's relevant to all of us, and all of us young people, especially in today's generation, we are very careful, we are very particular about our health. We all could try to go to the gym whenever possible, or do some kind of exercise, physical exercise and activity whenever possible, wherever and whenever we have access. So one of the most favorite routines, or in terms of health practices for all of us, is typically going to the gym, and doing some kind of weight training. We look at all our heroes in movies, whether it's Bollywood, whether it's Hollywood, and we dream of building or sculpting the kind of physique that our favorite heroes have. Though 99% of the time it's very hard for us because we do not have access to the resources and time that they have. But within our capacity, we all dream and we all try to work towards that physique. Having the six-pack, abs, the chest muscles, the biceps and triceps, the whole package. So, but today with the video we are going to watch is going to address that from a health perspective. Is going to the gym and doing weight training and building the kind of physique that we want, is it always the necessary precursor to good health? I don't think so, because from what I have learned, health and fitness are two different things. They can overlap but don't always have to. So today we are going to watch the benefits of gym and yoga and how one complements the other. So let's watch the video first. करंट लाइफस्टाइल में हेल्दी रहने के लिए फिजिकल एक्टिविटीज बहुत जरूरी है, एंड इसीलिए हेल्थ एक्सपर्ट डेली रूटीन में एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स एंड योगा करने की सलाह भी देते हैं। पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि योगा बहुत तेजी से जिमिंग एंड बॉडी बिल्डिंग से ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। बट देखा गया है कि जो लोग जिम जाते हैं या फिर बॉडी बिल्डिंग फील्ड में हैं, उन्हें कन्फ्यूजन होती है कि योगा उन्हें कैसे हेल्प करेगा एंड क्यों करना चाहिए। इस वीडियो में पहले हम बात करेंगे जिम और बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइज एंड योगा के बीच डिफरेंसेस की, एंड साथ ही देखेंगे कि योगा क्यों ज़रूरी है या बॉडी बिल्डिंग या जिम एक्सरसाइजेज को योगा के साथ करना कैसे हेल्पफुल एंड बेनिफिशियल है। बॉडी बिल्डिंग मतलब लॉट्स ऑफ वेट ट्रेनिंग, जिसमें जॉइंट पर एक्स्ट्रा दबाव पड़ता है एंड जिसकी वजह से बॉडी बिल्डिंग करने वालों में मसल एंड जॉइंट पेन होना आम बात है। वहीं दूसरी तरफ योगा वेरियस जॉइंट पेन्स एंड मसल एक्स को दूर करने के लिए बेस्ट है। योगा पोस्चर जॉइंट्स एंड टेंडन्स में ल्यूब्रिकेशन को इंक्रीज करने में भी कारगर है, जो कि जॉइंट एंड टेंडन हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। सो अगर बॉडी बिल्डिंग के साथ योगासना को जोड़ा जाए तो एक डिजायर्ड फिजिक के साथ साथ हेल्दी जॉइंट्स एंड मसल पाना बहुत आसान हो जाएगा। बॉडी बिल्डिंग में मेन फोकस आउटर बॉडी एंड मसल बिल्डिंग या मसल ग्रोथ तक ही सीमित होता है, जबकि योगा आउटर बॉडी एंड मसल के साथ साथ इंटरनल बॉडी या इंटरनल ऑर्गन्स की हेल्थ को भी टारगेट करता है और उनकी परफॉर्मेंस को एनहेंस कर देता है। सो टोटल बॉडी फिटनेस के लिए बॉडी बिल्डिंग एंड योगा का कॉम्बिनेशन यहाँ भी फिट बैठता है। बॉडी बिल्डिंग मसल्स को शॉर्टन कर देता है, जिस वजह से अक्सर देखा जाता है कि मोस्टली बॉडी बिल्डर्स एंड जिमर्स की बॉडी में काफ़ी स्टिफनेस होती है, जिससे वर्कआउट के दौरान उन्हें फुल रेंज ऑफ मोशन, जो कि मसल गेन एंड स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज़रूरी है, वो नहीं मिल पाता। बट रेगुलर योगा एक्सरसाइजेज या प्रैक्टिस से आर्म्स, लेग एंड जॉइंट्स एक्सेट्रा की फुल रेंज ऑफ मोशन अचीव करना बहुत ही आसान है। मसल लेंथ एंड स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, जो कि मसल गेन के लिए बहुत ज़रूरी है। सो क्वालिटी मसल गेन के लिए भी योगा एंड स्ट्रेचिंग आसना बहुत ही हेल्पफुल है। एक हैवी वेट ट्रेनिंग के दौरान बॉडी बहुत से न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी को बर्न कर देती है, एंड बॉडी काफ़ी लैक्टिक एसिड भी प्रोड्यूस करती है, जिसके कारण बॉडी में वर्कआउट के दौरान या बाद काफ़ी थकान महसूस होती है। वहीं दूसरी तरफ योगा प्रैक्टिसेस में प्रॉपर एक्सरसाइजेज लाइक आसनास, प्रॉपर ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस एंड प्रॉपर रिलैक्सेशन होने के कारण योगा प्रैक्टिस करने के बाद पर्सन बहुत ही फील फ्रेश करता है, ना कि थका हुआ। सो एक हैवी वर्कआउट के बाद योगा प्रैक्टिस बॉडी को रिलैक्स करने एंड एनर्जेटिक बनाने के लिए बहुत बेनिफिशियल मानी जाती है। बॉडी बिल्डिंग के दौरान मील्स इंटेक काफ़ी बढ़ जाता है, स्पेशली प्रोटीन, कार्ब्स एक्सेट्रा, जिसे मसल गेन एंड रिकवरी हो सके। एंड इन सब जरूरतों को पूरा करने के लिए बॉडी बिल्डर्स एंड जिम गोअर्स बहुत से सप्लीमेंट्स कंज्यूम भी करते हैं, जिससे डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज एंड गट रिलेटेड इश्यूज बहुत आम बात है, एंड इन्हीं सब वजहों से बॉडी में टॉक्सिसिटी भी धीरे धीरे बढ़ जाती है। एंड वहीं दूसरी तरफ योगा में कंट्रोल ब्रीदिंग, आसनास एंड क्लेंजिंग टेक्निक्स सभी मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करती हैं, डाइजेशन को इंप्रूव भी करती हैं, बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करके बॉडी क्लेंजिंग में भी हेल्प करती है।
कुछ बॉडी बिल्डर स्टेरॉइड्स भी यूज करते हैं, सो ऐसे में योगा स्टेरॉइड से होने वाले टॉक्सिक इफेक्ट्स को भी न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करती है। बॉडी बिल्डिंग में मसल गेन एंड पावर दोनों के लिए ही बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल बहुत अच्छा होना जरूरी है। एंड एक हैवी वर्कआउट के बाद काफी टेस्टोस्टेरोन एंड बाकी न्यूट्रिएंट्स यूज होते हैं, जिसकी भरपाई एक अच्छे रेस्ट एंड डाइट से ही कर सकते हैं। बट फिर भी कुछ कमी रह जाती है। एंड काफी स्टडीज के मुताबिक बॉडी बिल्डर्स में स्लीपलेसनेस का इशू देखा जाता है। एंड धीरे धीरे बिहेवियरल चेंजेस होना भी एक आम बात है, जिसमें एग्रेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन एक्सेट्रा कॉमन है। एंड इन टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को स्लो भी कर देते हैं। ऐसे में योगा की बात करें तो प्राणायाम, मेडिटेशन एक्सेट्रा को ग्लोबल लेवल पर बेस्ट एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस रिमूवर के तौर पर देखा जाता है, जिसका मतलब है साउंड स्लीप, जो कि टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी है। साथ ही कुछ योगासना, फॉर एग्जांपल सर्वांगासना या शोल्डर स्टैंड, हलासना या फ्लो पोज, उष्ट्रासन या कैमल पोज या कंधरासन या फिर ब्रिज पोज, जिन्हें टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट करने के लिए बेस्ट माना जाता है एंड बहुत हेल्प मिल सकती है। सो बॉडी बिल्डिंग करने वालों के लिए रेगुलरली इन योगासनास को करना बहुत बेनिफिशियल है। वेट ट्रेनिंग या बॉडी बिल्डिंग में मसल पंप या एक्सेसिव मसल ग्रोथ होने के कारण ब्लड बॉडी में कंप्लीटली सर्कुलेट नहीं हो पाता, जिसके कारण हार्ट पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है एंड बॉडी के कई हिस्सों में एंड मसल में ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुंच पाती, जिस कारण से बॉडी बिल्डिंग करने वालों को क्रैम्प्स एक्सेट्रा का इशू होना बहुत कम होता है। बट योगासनास के डिफरेंट स्ट्रेचिंग पोस्चर्स, बहुत से ब्रीदिंग टेक्निक्स लाइक अनुलोम विलोम या अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग टेक्निक्स एंड दूसरे कई प्राणायामास की रेगुलर प्रैक्टिस ऑक्सीजन को बॉडी के हर पार्ट में इजीली फ्लो करने के लिए बेस्ट है। सो इसीलिए एक हैवी वर्कआउट के बाद योगासनास एंड ब्रीदिंग टेक्निक्स की प्रैक्टिस करना अच्छी मसल हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद माने जाते हैं। इन सब के अलावा बॉडी बिल्डिंग, जिम वर्कआउट्स एंड योगा के कुछ और डिफरेंसेस की बात करें तो बॉडी बिल्डिंग या जिमिंग किड्स एंड ओल्ड एज के लोगों को रिकमेंड नहीं किया जाता। वहीं योगा किसी भी एज के लोग, चाहे वो बच्चे हों, जवान हों या ओल्ड एज, सभी कर सकते हैं। बॉडी बिल्डिंग या जिमिंग के लिए बहुत से इक्विपमेंट की नीड होती है। वहीं योगा के लिए किसी और चीज़ की नीड नहीं चाहिए, तो आपकी खुद की बॉडी, एक योगा मैट एंड उसकी भी कोई खास जरूरत नहीं, तो इस लिहाज से योगा करना सस्ता भी पड़ता है। ऐसे ही बहुत से डिफरेंसेस हैं योगा एंड बॉडी बिल्डिंग या जिमिंग के, बट हमने इस वीडियो में कुछ मेजर रीजंस की बात की कि योगा को बॉडी बिल्डिंग के साथ कंबाइन करना क्यों ज़रूरी है, जिससे आप भी अपने वर्कआउट शेड्यूल में योगा को मिक्स करें एंड हेल्थ रिलेटेड फेवरेबल रिजल्ट ले सकें। सो फ्रेंड्स, यहाँ हम इस वीडियो को फिनिश करते हैं एंड होप इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके ज़रूर काम आएगी। इस वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो के सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी या फिर सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट करें। रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो या लाइक करें, हमारी साइट fitnessfocus.com को विजिट करें एंड लेट द फिटनेस रॉक। So I have done both, gym as well as yoga, but I started off only with gym, and for a few years before I incorporated yoga into my regimen, and so I can, from my experience, I can speak for the video what he says. So the couple of the disadvantages of just going to the gym, right? So that's pretty much true what he said, muscle stiffness and soreness, joint stiffness and soreness, the possibility of injury, especially if you are doing free weights and heavy weights. There is always the risk of injury, and I have kind of injured. I have injured my rotator cuff. I had elbow injuries, so I had my share of injuries, and I worked around them, and but I recovered from them. But these are things that I did go through when I went to the gym alone, and definitely there are benefits to going to the gym always. It's any day doing any kind of exercise is better than not doing any exercise at all. So definitely I saw a lot of benefits when I started going to the gym. But I have to say there are drawbacks, and there was a time when I hit a plateau, in terms of how much I was able to shape my body and how much I was able to convert to muscle, fat to muscle and those kind of things. There I hit a plateau, and then I realized it's because the stiffness meant that my muscles were not getting the blood that is required for proper growth, the nutrients. You know why? Because the stiffness means that your muscles are kind of impeding blood flow. Your blood flow is restricted, like he mentioned, in like the veins they get contracted because of the enlargement of the muscles and the stiffness of the muscles. So that means that's impeding the flow of blood to all the muscle groups in the body, or all parts of the body, which means you're not actually getting the benefits that you're hoping for, of the entire workout.
So, and obviously also gym when we are doing free weights, we don't do the full range of motion. And a lot of this, the exercise, the gym exercises with weights, like, which the trainers teach us, they only target the big muscle groups, the ones that you can easily see to show off, the pecs, the biceps, and those are the big muscle groups which you can just use for showing off. But a lot of these exercise regimens, they neglect the smaller muscle groups, the supporting muscle groups, like the side muscles in the core, or the muscles that are supporting the biceps, and so what happens is there is an imbalance. When the big muscle groups when there is a imbalance between the strength of the supporting muscle groups and the big muscle groups, there is a risk of injury for when you do regular movements, which you normally don't associate with. So those are some of the things that you need to watch out for when you go for weight training and when you only go to the gym. So, but I found that, and like when we talk about our Hindu perspective, Indian perspective, we always talk about prana, or like Chinese perspective, we talk about the chi, or the energy level. So when the blood flow is constricted because of the the compression of the veins and stiffness of the muscles, your prana is not flowing well to all parts of the body. So which means it's a detriment in terms of health perspective, if not from a muscle perspective. So when I started yoga, I immediately noticed huge benefit in the muscle development, than when I was doing gym alone. So because it improves flexibility, it improves circulation, and it basically ensures that the blood flow to all parts of the body is smooth. And like I mentioned in the beginning of the video, there is a difference between health and fitness. You can be fit, but you can still be unhealthy when your internal organs are not in good health or shape. So we need to make sure that we are also taking care of our internal health and not just the physique for showing off. So in that sense, I feel like adding yoga to your gym regimen is definitely a huge plus to your daily regimen in boosting your health and fitness. So I hope you like this video. I hope you're able to relate to the important topic, and for those of you who are going to the gym, I hope you will understand the advantages of adding even simple, like your like Surya Namaskaram, that is beneficial in itself. You don't have to do the entire asanas that he even mentioned. He talked about like the camel asana and all that. Even just adding a simple practice like Surya Namaskaram can give you huge benefits. So let me know what you think. For those of you who have already been doing both of these things, let me know how it has helped you, and whether you agree or disagree. And please to like, share, and subscribe to my channel. Thank you so much. Bye.